सुन रहा था ज़माना, बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दोस्तों, अब आइए मैं अगले मुकर्रिर की हैसियत से मोहम्मद इनायतुल्लाह को इस शेर के साथ मदरू कर रहा हूँ कि शहंशाहे बलागत चले आइए, शहंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, शहंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलज़ारे तैयबा के गुल की महक खुशबुदारे तिलावत चले आइए। मौसूल पैसा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most Alhamdulillah, Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd, amma ba'd. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. अनाअत कर आलमे रंगों पर अनाअत कर आलमे रंगों पर चमन और भी अनाअत कर आलमे रंगों पर चमन और भी जहाँ चमन और भी जहाँ और भी है। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और Dear audience, a very warm welcome to all of you. Today, I would like to share my thought about the importance of education. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. In today's time, education is very important for everyone. You can know something in your life. If you are not educated, you can never achieve your goal without education. Dear friends, the education system has improved a lot and moved to greater heights as compared to that in the past centuries. The 21st century has presented us an education system that is technology driving, in which ideas and inventions have outperformed both machine and man. So my dear brothers, it's high time to adopt technology to make education easier and accessible to all, and technology can play a crucial role in this field too. That's all I wanted to say. Thank you so much. MashaAllah.